गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे कि इंडियन गर्ल जो है वो पाकिस्तानी फूड ट्राई कर रही है फर्स्ट टाइम, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बिकॉज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फूड की हम वीडियोस देख चुके हैं, बट ये समझना कि भाई एक इंडियन को कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अलग टेस्ट भी हो सकता है। और कहा जाता है कि भाई दोनों देश बहुत लड़ते हैं कि भाई हमारा खाना ज़्यादा अच्छा है, हमारा खाना ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं फिर किसका अच्छा है। तो आप भी देखो मेरे Namaste, assalamu alaikum, dosto. Look what we've got here today. Manu is going to be trying Pakistani food for the very first time. And if you're a foreigner watching, do keep watching because you're going to learn a lot about Pakistani food and you're going to find out where to come here in Dubai for the best and the cheapest Pakistani food. And now, babe, तो आप पाकिस्तान 2 बार गए हैं, कैसा था? मैंने बस बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं लग रहा था मैं किसी दूसरे देश में हूँ, कहीं और जगह पे हूँ। बहुत जानी पहचानी सी जगह थी, जाने पहचाने से लोग थे। You went to Kartarpur. She went to Kartarpur, and she went twice. And this is only Punjab, na? हाँ, पंजाबी था। You got Punjab on the Indian side, you got Punjab on the Pakistan बस एक side. करतारपुर गुरुद्वारा पूरा अपने माता पिता खानदान परिवार वो फिर पाकिस्तानी वीजा लेके। अरे परिवार ने पहले थोड़ा वरिड थे क्योंकि कोई आमतौर पर आता जाता नहीं है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है। सही बात है। तो दे सेड कि जाने से पहले कॉल करना और आने के बाद कॉल करके बता देना सब ठीक है कि नहीं। बट और अनुभव कैसा था? जब मैंने जाने के बाद क्या हुआ? अरे मार गया? वो न्यूजीलैंड का है ना, उसने लर्न किया है। वापस आए सही सलामत। पर जब मैंने वापस आने के बाद उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको बताया कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा था और बल्कि अच्छे से भी और अच्छा ही था। मुझे लग रहा था मैं ही ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैंने दादा की, नाना की, सबके फ्रेंड्स की कहानियां सुनी उस टाइम की। बट वो फीलिंग हम सब में थी, वो एक शेयर्ड फीलिंग थी जो उन्हें भी लग रहा था ऐसा ही। और भी सम ऑफ अस वर टीयरी आई, है ना, इमोशनल, सब इमोशनल थे। और जब वो पाकिस्तान में थे तो खाना खाया, कुछ खाना खाया या नहीं? हाँ, खाना खाया ना, गुरुद्वारे में खाना खाया। बहुत सिंपल फ्लेवरफुल फूड, लेकिन इट वाजंट हाई ऑन स्पाइसेस। मसालेदार नहीं था, बहुत फ्लेवरफुल था, सटल था और बहुत ही अच्छा था, अलग था। तो वो लंगर था, ये अलग खाना है, ये प्योर पाकिस्तानी खाना है ना। और ये वेजिटेरियन था, ये नॉन वेजिटेरियन। हाँ, तो चलो let's see how she likes Pakistani food, है ना? Okay. आ जाओ। आपको उससे ही पता लग जाता है कि इंडियन है कि वो नॉन वेजिटेरियन बोलता है, वरना कोई भी और देश में नहीं बोला जाता है। Alright, we're here at Park Liari. In Pakistan, Pakistan. Liari is a suburb in Karachi. And there's no one here right now because everybody is praying. They're at the mosque right now, so even the staff are there. So we're just waiting for the staff to come back. And at 7:30, we'll be able to place an order and try some food, okay? And now this is my favorite restaurant for Pakistani food here in Dubai because it's so cheap. Biryani is like 15 dirhams only. That is really cheap for Dubai. So it doesn't matter who you are here in Dubai. 350-400 रुपीस का इनको दुबई का खाना मिल रहा है। And you can have some good ब्रेन मसाला, पराठा, ब्रेन मसाला क्या है? And at a really cheap price. And one other quirk that she didn't know. So yeah, in Pakistani restaurants, a lot of people would ask me in my videos, Carl, why don't I see any women in Pakistan? Now there's a reason for that. When I'm vlogging in a restaurant, they sit me with all the single males, okay? So there's a separate section for single males and a section for families. And we're in the family section Family right now. section अलग है. But usually I have to sit in the male section, okay? And as soon as we walked in, we went to sit down in the male section and they're like, no, you guys can go upstairs to the family section. So that's how it is, okay? You can thank me. Yeah, and that's why you don't see many women in my Pakistan videos when I'm eating food. Because I'm not allowed to enter the female section and especially not allowed to film there as a single male. Yeah, so that's an important tip for foreigners or anyone who hasn't eaten in a Pakistani restaurant before. Men and women, families and single males are segregated. So if you walk into the family restaurant and they ask you to go downstairs, I mean, they're not being rude, it's just how the restaurants are structured, okay? I just got to show you guys छोटे रेस्टोरेंट को भी दो सेक्शन तो बनाने ही पड़ते होंगे। But just be careful because sometimes at Pakistani restaurants they're using meat stock. So you got to really check if it's pure veg. Meat stock. And if we look at the prices for dals, for example, Mashur dal, 6 dirhams, just 134 rupees. Cheap. That's it. That's like as cheap as India. Yeah. And then dal gosht, just 12 dirhams. So just like गोश्त के साथ भी इतनी सस्ती। Biryani 15 dirhams.
So like बिरयानी भी 300 सही है। rupees. That's 340 it. वो रुपए। ये There's जो एक also मूवी में आते lassi हैं ना and कौवे tea, की टांग दे both रहे हैं मेरे को 1 लग रहा है। dirham, same as naan अच्छा। as well. So I don't know how they make it for so cheap here in Dubai because Yeah. everything is just so expensive here. But yeah, when you come to this place, nah, anybody can पाक eat here. लियारी। हमको मटन बिरयानी चाहिए, डबल मसाला, ठीक है? दाल गोश्त वहाँ पे हिंदी वगैरह समझ जाते और हैं दुबई में? मलाई बोटी। वो है अरे ना वर्कर तो restaurant, सेम ही होंगे ना। रोटी चाहिए आपको? Still. नहीं, और एक स्प्राइट। जी, थैंक यू। खाना आ गया। Oh wow. दाल look और at that. गोश्त। Delicious. अच्छा उसमें मिक्स कर Wow. देते हैं। Oh, Shukran. बिरयानी। We've got a feast. Let's start with the बिरयानी basics, लजीज okay? लग So रही है। this is biryani, and always order with double masala. They'll give you double the flavor in there. Let me show you. Look at that. You want lots of flavor. Then we have, this is dal gosht. Isn't This it is too lentils spicy for him? and उसके लिए नहीं वो mutton. No. वो हो गया। Have you ever seen तीखा। lentils with वो meat? इंडिया में ही रहता है, उसकी वाइफ इंडियन है ना। Tried it and that's why I really wanted to try this, so I ordered it today. Usually you'll get a salad as well, and you'll get some raita. And then we have अच्छा खासा मंगाया दो जनों के This लिए। is just pieces of chicken that have been cooked over the fire downstairs Tandoori. over the grill, Oh. covered in इसकी malai, खुशबू which is मस्त आती cream, होगी। and it comes with this very spicy sauce. Oh. You can use your fingers, eh? Oh, I dropped the whole piece in there. Wait, don't use your knife and fork. What are you doing? ये और इंडियन ये है ज़्यादा अब इंडियन कहाँ वो से? फॉरेनर और लग वो रही है बॉर्डर हाथ से उठा रहा है। Cut it into a smaller piece. मुझे वो फॉरेनर लग रही है। ये ऐसा ही हो जाता Keep है। it dizzy, babe. Are you trying to troll me? Of course, use your hands. Chicken is usually dry, but this one is very juicy. Juicy. You know why? Why? Because of malai. Nay, it's all about freshness of the meat. Oh. In Pakistan, the meat is always super fresh. Like, they'll cut it and then they'll cook it. That's why, huh? Yep. What about slow cooking? That makes it juicy too? Yeah, slow cooking does, but this hasn't been slow cooked. This has been cooked over the charcoals. And can you guys see how big this plate is? This is enough for 4 people. I'm just eating straight out of the bowl. Enough for 4 This biryani people? mein aloo hai. Haan. You know what that reminds me of? My favorite biryani, which Bengal. is Bengali biryani. hai na? Oh, मैंने They put हैदराबाद ही potato in सुना है। everything, and I love that. Potato should be in everything. It is not high आलू का on सबसे chili, अच्छा लगता है। but it's high on flavor. So yeah, there is something different. You know, whether it's a Hyderabadi biryani, Pakistani biryani, or Bengali biryani, the spice mixture is the biggest difference. That's it. I got one difference. हर Okay? एक जगह की अपनी Look at the quality amount है। of oil there. That's one big difference between Indian and Pakistani food. They just use more oil. Okay. I want you to try. या ज़्यादा हाँ मैंने dal देखी है gosht. वीडियोस में Just घी taste the ऑयल dal बहुत first, डलता है। Okay, just put your spoon in दाल में भी बहुत डालते हैं। and just see how different it tastes, or not. It is different. डिफरेंट Less मतलब spice or more spice? अच्छी नहीं। Same spice. Same You amount think? of chili, yeah. I say that like Pakistani food has less spice than Indian food. Indian food has like way more complex flavors, and Pakistani Yeah. food is more simple. Yeah, like in that sense, yes. I was talking about the quantity. You're talking about the number of spices? Yeah, it's different. Yeah, the number of flavors are less, so you can taste each flavor. Yeah. And the Indian dal sometimes has हमारे में तो सब कुछ so many spices that you can't really taste the individual flavors in it. But here you can. So I got one big question to ask you in a sec, but like just overall, how do you rate this food? Oh, it's Are you amazing. I'm very impressed. This मुझे is तो वो great. excite Especially the कर देता था। biryani is my favorite. That's one of वो the है beautiful क्या things वैसे? about Dubai. You can come here सफेद सफेद। and you can have whatever you want from any place in the world. Indian So food खाओ, I think a lot of Pakistani food Indians खाओ। will come here just to try Pakistani food, and they'll get to try it here. And now, like, this isn't a question of which is better, Indian food or Pakistani food. They say diversity is the spice of life. उनको स्पाइस So स्पाइसी we've लग got रहा है different थोड़ा। flavors from जबकि वो कह रहे थे different कम है यहाँ पे। parts of India. or India में ज़्यादा Pakistan, होता है। and, yeah, you're lucky to have all of these different flavors, hey na? Like, it feels good to be here. Yeah. Thank you so much, Ji. खाना बहुत अच्छा था. मेरे हिसाब से तो यार खाना मेरे को काफ़ी कमाल का देखने में लग रहा था, बट यही है कि अब इंडिया में वो कैसा बनता है और हम लोग भी सेम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो उसका आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक दाल लग रही थी वो बहुत ज़्यादा उसमें घी और वो डाला गया था, मैं उससे कम प्रेफर ही करता हूँ। बट ये कि उसको हेल्दी माना जाता है, और पंजाब साइड में मैंने देखा वहाँ भी इतना ही डालते हैं। सच में यार, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पाकिस्तानी दाल की रेसिपीज एक बार देखी थी, क्योंकि एक बार रील आई थी तो मुझे बहुत लजीज लगी थी। तो उसमें घी बटर इतना सारे मसाले डाले
डाले थे। मुझे तो उल्टा लग रहा है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान में ज्यादा स्पाइसेस यूज होते होंगे। पता नहीं कैसा है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।